केंद्र सरकार 10 वर्ष क्षमतार बीजेपी 10 वर्ष है केंद्र क्षमतार अच्छा चाषी समस्या को दूर कर पारे नहीं 2014 कहते आम जदि क्षमता का आसबू मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2 गुण करूँ चाषी इनकम को 2 गुण करूँ दुईटा भी हलाने इलेक्शन के 10 दिन आगु से मैंने चाषी को मन पकईले मन पकईकि 3100 टंका आम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देवु बोली कहते दुर्भाग्यजनक कथा कौन हो पारे 10 वर्ष चाषी को मन पकईले नहीं एवं 2014 आसवा बेले कहते दरदाम वृद्धि को आम कम करूँ तेल दर डाली दर पेट्रोल दर डीजेल दर माँ मानकर एलपीजी सिलिंडर दर सबको कम करी बोली आसते आसला ये सब प्रतिश्रुति की भूलीगले बहुत बड़ा बड़ा कथा कहते रोजगार देवु 2 कोटी युवक को रोजगार देवु प्रति वर्ष मु जानवर बोधे 2 लाख रोजगार भी है नहीं जदि 2 कोटी करते 10 कोटी होता 10 वर्ष रे ओडिशार भाग पड़ता 80 लाख नहीं 80,000 भी है नहीं कि 8,000 चाकरी भी दे नहीं भारत सरकार एबे इलेक्शन आसीगला जो भी प्रतिश्रुति देते सबूरे फेल मारे ओडिशा प्रति एते अवहेला एते अन्याय होती प्रति वर्ष कोयलू 27,000 कोटी टंका पाँच MCL नाल्को 3-4 हजार कोटी पाँच रेलवे 20-25,000 कोटी पाँच सबू मिसिले ओडिशारू 90टा पखापाखे 60-70,000 कोटी टंका हो केंद्र सरकार दौरान 5-6 हजार कोटी 10 गुणा अधिक टंका ओडिशारू नौ नेबा बेले चतुर्भुज देवा बेले काली हाथ से चलुची यहीटा कि जदि प्रश्न पचारे ताले रत्नभंडार कथा कहे कि आउ किसी कथा कहीकि डाइवर्ट करने चेष्टा करिंबा अशालीन भाषा आम प्रिय मुख्यमंत्री को असम्मान करा को ओडिशावासी समस्त जानी ओडिशावासी 1 तारीख रे बहुत भल उत्तर देवे जवाब देवे मोर दृढ़ विश्वास अच्छी सर आज केन्द्र कांग्रेस एंड बीजेपी मोदी जी भी आसुचंदी केते प्रभाव पकेब 2014 भी आसते 2019 भी आसते 2026 भी आसुँच से मैंने जदि जो भी काम होते सेटा करते प्रभाव पकईता किसी काम करूना आसिकी पूरा डाइवर्ट करी कॉमन मैन जो भी मुद्दा अच्छी मिडिल क्लास जो भी मुद्दा अच्छी ओडिशा पे जो भी अवहेला हो सबू क्षेत्र में टेलीकॉम क्षेत्र रेलवे क्षेत्र नेशनल हाईवेज आप देखिए कोस्टल रिंग रोड कोस्टल हाईवे 10 वर्ष है इटा पड़ी कैपिटल रीजन रिंग रोड 10 वर्ष है कौटी अलाइनमेंट हम से जापर नहीं संबलपुर कटक NH किसी है नहीं सो आप देखिए कौन सी नेशनल हाईवे ओडिशा रे भल स्थिति रे नहीं और आप देखिए इवन खुर्दा बरमपुर रोड केते वर्ष है काम चलुची आपंकर यही रास्तार तो बालेश्वर रास्तार सब बेले ड्रेनेज प्रॉब्लम अच्छी दिस इज देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स ओडिशा जदि ये ऊपर प्रश्न पचारे से रागिंट अशालीन भाषा आम प्रिय मुख्यमंत्री की गाड़ी दौरान टॉपिक डाइवर्ट कर मुद्दा उपरे उत्तर देवाक साहस भी नहीं तक्यता भी नहीं तो किसी जगन्नाथ मंदिर चारिद्वार खुला मत एसजेटी डिसाइड नबे हमारा से मत दुर्भाग्यजनक कथा किसी है नहीं पारे जड़े बहुत सचोट ऑफिसर ओडिशा रे जदि नक्सलिज्म कमी बहुत बड़ा भूमिका रोचे छत्तीसगढ़ में एवं सुधा नक्सलिज्म बंद हो पार नहीं ओडिशा रे बंद से जीवन के रिस्क नहीं कि नक्सल संग्रह लड़ी से गजपति जिला हो कि IG ऑपरेशंस नक्सल मूवमेंट अगेंस्ट जो भी काम करते लाइफ प्रति थ्रेट अच्छी से काम करने लोगों को ऊपर
राजनीतिक उद्देश्य रे एटा नहीं चल बोली मु भाबी एटा ठीक पता नहीं सेटा भी मु तो राजनीतिक उद्देश्य रे जो भी बीजेपी नेतृमंडली चाहूँगी सेटा होची एटा दुखर कथा माननीय मुख्यमंत्री किंबा विजु जनता दल केबे भी ऑफिसर मानक कौन सी इलेक्शन प्रक्रिया रे केबे भी व्यवहार करूना बीजेडी बहुत स्ट्रांग होची मजबूत होची हमारा कर्मी कोटीएम 1 करोड़ मेंबरशिप होची हमारा किसी दरकार नहीं बीजेपी की दरकार पड़ी पारे किंतु बीजेडी की किसी दरकार नहीं पर्सनल ओडिशा लास्ट जो इलेक्शन होची बीजेडी रा सबसे भलो परफॉर्मेंस होई 95% स्ट्राइक रेट कबो in English. The central leaders who are coming to Odisha repeatedly are the other state chief ministers. Their campaign will not have an impact because they have not done anything for Odisha. They are taking about 60,000 crores from Odisha, repaying only 4,000, 5,000 crores. They are all shedding crocodile tears, saying that Odisha is a mineral-rich state. Okay, coal is one of the biggest minerals from Odisha. You take 27,000 crores, 30,000 crores, you give 4,000 crores to Odisha, what Odisha will do? You are crying for Odisha. Why do you take 27,000 crores? Why can't you revise the coal royalty for last 20 years? What mistake people of Odisha have done? If you have revised the coal royalty from 2004, now Odisha will be getting 15,000 crores out of the 30,000 crores we are taking away. 15,000 crores means 11,000 crores extra for Odisha every year. We spend 5,000 crores in BSKY. We have to spend 3,500 crores for an entire metro in Bhubaneswar. So people of Odisha can understand what the center takes away from Odisha and shedding crocodile tears. Many of the center leaders come and say, Odisha is mineral rich, mineral. Yes, we are mineral rich, but where are you allowing us to get the profit out of minerals? You are giving us pollution and taking away all the profits, whether it is NALCO, whether it is MCL, whether it is NTPC, everywhere. So people of Odisha will not be swayed away by your statements, all the central leader statements or the chief minister statements. If they have done something for Odisha, definitely their visit will have an impact. If they have not done anything for Odisha and they are shedding crocodile tears, people of Odisha are smart to know that. So I thought, Sir, after result declaration, first It's- project valuation में कौन रहेगा? it's very unfortunate that some of the officers who are working for in the chief minister office have been taken action by the election commission. I would say that those two officers are two of the outstanding officers of Odisha, and both of them have played a great role in controlling Naxalism in Odisha, risking their lives. Whether it is Gajapati or Malkangiri, I think they have been awarded by the highest authorities in the country for their commitment, dedication, sacrifice. This is very unfortunate, and it is as per the design of Bharatiya Janata Party, which cannot digest imminent defeat in the hands of Biju Janata Dal, and it cannot stand against the popularity of Navin Babu and his sway over the people of Odisha. I told her. So yesterday Amit Shah was here. He again raised the issue of Lord Jagannath Bhandari missing and said when BJP will come to power, then the person responsible will be put in jail. Absolutely. Whoever is responsible should be put in jail or should be sent to Andaman Nicobar or something. I will be very happy. Just that 40 years nobody bothered about Ratna Bhandar, and 40 years Ratna Bhandar has never been opened. And in that 10 years, BJP ministers were holding the charge. So they might also be responsible then. So nobody knows in the 40 years what has happened. And with all humility, the state government has tried its level best to secure the Sri Mandir by having a safety corridor. There was no safety corridor for the Sri Mandir. Just because the Chief Minister has provided a safety corridor and a parikrama, BJP is not able to digest. People of Odisha are appreciating the great work done by the Chief Minister in Sri Mandir. So they have to find some fault, some falsehood to defame the Chief Minister and his great work. People of Odisha will not be swayed by this falsehood, and we will be very happy if they find out the truth. BJP leaders and Amit Shah is particularly targeting you personally. How do you see it? And he said that on 10th June, Bhumi Putra will, who speaks Odia, will come to power. I think 9th June itself, Bhumi Putra will only take over. The one he speaks not just Odia,
but lives in the hearts of people of Odisha. He will be the Chief Minister. On 9th June, between 11:30 to 1 p.m., the son of the soil, who lives in the hearts of 4.5 crores people of Odisha, will take over as the Chief Minister. Sir, after elections, if the NDA falls short, will the BJD support the NDA? We are fighting tooth and nail now. 3 days before election, and we will continue to fight. Thank you. Hello.